Vikas Jain sir to escort the faculty on the dais. Welcome, sir. Before starting the session, I would like to give a brief introduction of CA Kuntal Shah sir. He is practicing chartered accountant since 2007. He is a subject expert of statutory audit, concurrent audit, taxations of cryptocurrencies, and so on. He is always contributing to our institute by his publications in these fields. He is also a regular speaker in various seminars organized by ICAI across India. So without taking much time, I would like to request sir to take the dais. It is indeed a pleasure to be at the home branch. Hitesh bhai called me up and then I had a talk with Sunil bhai as well. Sunil bhai actually my professor. I studied under him. So I always have a different set of connection with him as a teacher and a student. It's always a good when we speak at our own place. The topic that is assigned to me today is audit under CBS environment. The presentation, those who have attended last year, it's almost same. So I am very blunt on that part. So don't worry about it. In any case, I will be giving my entire presentation along with other parts as well. This time I have added certain portion into it. So depending upon the requirement or your queries or something, we can move around with certain part of the presentation. If you have any queries, you can post it right now as well. So I'll drive my presentation accordingly instead of taking the way I would like to. But if you have any queries on CBS, I'll be happy to sort that out. Anyone? અત્યારે તો ઓછા લોકો છે એટલે તમારે કોઈને કહેવું હોય તો કહી શકો છો. નહીં? Okay, not an issue. We'll proceed further. I'll surely give you time to have that during the course of session as well. Some set of disclaimers. This is what wanted to discuss today. There are 4 parts actually. First part is almost the same which was there in the last year. But there are certain other parts, part 2, 3 and 4. I have added this time because there have been certain instances where RBI has reported heavily on or selected certain accounts or certain banks in a manner in which where certain automation system did not work, or someone tried to work around in a system where the system did not function properly. So what as an auditor is our role? What are our risks that we should be thinking on to, and how to carry out audit through various CBS systems? There are plenty of systems. There is no one stick for all approach. So you need to deviate, or you need to have a path to be taken according to the bank software and the rights that you have. Let's start with first part first. I'll quickly go through certain part. And then after we'll go into this remaining part. I will not touch upon LFAR. I will not touch upon IRAC much onto it except to the CBS part only, because there are separate sessions on that. However, what I have done is I have selected the path of LFAR, that is sequencing of an LFAR, to assimilate the system support that is available to carry out an audit. This is only for the smooth transition to the audit purpose. Entire presentation I'll share, so no need to waste your time into writing those. However, I'll tell you certain points which are not mentioned here. You can make note of those parts, right? So you can make with slide number as well. Okay, so let's understand what this slide is all about. First part, that is we are talking on an LFAR, on a asset part, on a cash part. The number in the parenthesis means there will be some more into cash part. This is what the LFAR states, and this is what the suggested audit checkpoint from CBS perspective only. ऐसा मत सोचिए कि ये पूरा LFAR का यहाँ चेक पॉइंट लिख दिया है, नहीं. LFAR को आपको जितने चेक पॉइंट लिखने हैं आप लिख दो, बट ये CBS के चेक पॉइंट्स ऐड करने के लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, राइट? पहले समझ लेते हैं स्ट्रक्चर कैसा है प्रेजेंटेशन का, एंड दिस इज व्हाट द सिस्टम सपोर्ट.
अगर ये काम आपको करना है, if you want to do this thing, then which are the menu codes which would be useful to you, right? Predominantly, there are 3 systems, 4 versions in vogue right now. Finacle, FlexCube, and TCS banks. Finacle is having 2 versions, Finacle 7 and Finacle 10. However, Finacle 7 is on a phase-out mode. So almost all banks are now under Finacle 10. However, I have kept Finacle 7 in case some banks are there where the Finacle 7 is working. You can make use of that. Now understand this, in 1 hour 15 minutes, I will not be in a position to take care of entire system, or rather even as part of a system. So this presentation is an abridged one. There is some detailed write-up into 2 publication of Institute, that is Guidance Note on Audit of Bank 2024 edition and Manual on Concurrent Audit. This both publication you can refer to. It's available for free to download on a PDF file. In that you have a chapter on CBS, and you can make use of that for a detailed explanation. Fair enough? Okay. So let's understand this. Since it's a first slide, I'll go in detail. Have the cash balances at the branch ATM been checked at periodical interval as per the procedure prescribed by the controlling authorities? So what it requires is that we do verify cash physically. We also would like to verify that bank would have done certain activity in terms of verifying cash at the periodical interval. The reporting that is made by the branch to the central team or the controlling authority, whether the balances are matching with those or not. Now let's say if the system says that the balance is 1 lakh rupees, whereas the reporting was made of 85,000. So then there is also a problem. Fair enough? So now what we need to do as an auditor is that we need to first verify, in case of a first part where we verify the balance, that is cash balance. Mara? Cash balance is on the date of verification, and whether balances as appearing in CBS agree with the balance as mentioned in the periodic review. So for that purpose, we can use these commands. Now let's understand first basics about this command, ACLI. It's friend of auditor, I always say that. It's like you all use Tally, right? In Tally, you have a display account ledger, DAL. You verify the ledger of any ledger that is created where the transactions are posted. So that's exactly the same in Finacle. That is ACLI, and in case of Finacle 10, you can use HACL INQ. There are 2 options actually, HACLI and HACL INQ. INQ will give you a detailed result, as well as it can allow you to go further to the transaction level. HACLI is basically an abridged version of an HACL INQ. So you can make use of HACL INQ. In case of TCS banks, these are short codes. In TCS banks also there are short codes available. However, these are in numeric codes. Now numeric, it's very difficult, 1005 or 720, that's very difficult to remember. So that's why what I have done is I have mentioned the complete flow. Go to the reports, go to the cash related reports and view cash summary. Right. So that's what the entire path is. When you go there, you will find certain set of reports. Sorry. Those reports would be useful for the activity that we would like to do. The same way we have other set of reports, branch reports, cash officer's jotting book report, or the reports, printing reports, and cashier teller reports. So this actually gives you the flow of menu. In case of a FlexCube, you can have right from the chart of accounts to the ledger balances. That is GLM 02, 04, Edgeline, and HGL VDB. Now, it may so happen that in certain banks, certain commands are not available or not accessible to the auditors. There may be the issue of an availability as well as accessibility. Now, in that scenario, if at all that command is very useful for us, we need to request to the branch user who has sufficient power, generally the branch manager, who will have power to access almost all menu codes. However, if the menu is not available, now why it can happen that way? It can happen because the bank would not have subscribed for that kind of service or those related services. So in that scenario, the menu codes would not be available to the bank in that particular software. This is only an indicative one. Don't consider this as a cent% information on that this is the only thing. Always see to it that this can only aid you. This cannot replace you, right? So you can't say that you have an audit checkpoints, and this is what the presentation. So this will
consider or this will take care of 100%. No. If any system or anything that takes over 10% from you, then you can consider that your life is over. Right? You can't think it that way. You can maximum use the system to your advantage. You can't make a situation where the system will replace you. And don't ever, never ever have that kind of thing. Right? A lot of systems are now happening where it says that it can do wonders. Right? उसके ऊपर भरोसे में रह के मत करना काम. हाँ, वो एड कर सकता है, उसको रिप्लेस मत करने देना अपने आप को. Always read what is written in circular and thereafter the guidance note. That is very important. That gives you an insight actually that what is there that is prescribed by the regulator as well as by the institute. Okay, so let's now go into the second part. Just a moment. Does the branch generally carry balances which vary significantly from the limit fixed by the controlling authority? Now that's a general question. Every time what we do is we compile the day-end balances, and the day-end balances we review it with the limit prescribed, and then we put a formula in Excel and we just simply put it as an annexure. As such, this kind of report would not be available specifically from any of the systems, the way in which you desired. However, you can very well access the ledgers, but that won't give you the day-end balances kind of report. Now, those reports are actually generated through an SQL. Now, SQL will actually talk with the backend or the database, and that generates the report. Now, many of the banks would have generated that report and posted into the network folder. Now, you can access from the network folder that whether this kind of report is available for this aspect or not. If at all it's not available, that will be a Herculean task for you to generate information through these options. But by and large, it has been observed that since it is a very old requirement of LFAR, and a lot of auditors do ask, so banks would generally provide this kind of report. Now this is on ATM. What I'll do is I'll skip certain part right now so that we can discuss on certain other aspects. Yes, this one. One of the point I'll explain into this part is scary, right? Whether balance confirmation certificates obtained in respect of outstanding balance as on the year end, and whether the aforesaid balances have been reconciled, the nature and extent of difference should be reported. Now, what happens is when the branch is having a balance with the other bank, let's say State Bank of India. So we are auditing, let's say Bank of Baroda, and one of the branch, remote location branch, or somewhere it has a balance with State Bank of India account. Now, for that particular account, the Bank of India system would have a mirror account into the system. Now, understand this, there is no system control into this mirror account and the transactions that is recorded by State Bank of India in its account. Now, that's a manual control. So, what we generally do, what we do is that on 31st of March, we verify whether the balance is matching or not. Right, we obtain balance certificate, we obtain bank statement as well. Right, and if it's matching, we completely say that yes, that's matching. And we say that there is no problem, there is no reconciliation as well. The problem lies with intervening period. There have been various instances wherein in an intervening period, the transactions were recorded but were not reflected into the State Bank's statement. I'll give you an example. Let's assume that my account is there in one of the bank where it is getting short of the credit turnover. Right, I am having a CC account and the last 90-day running period there is a problem. I am within the limit. However, the credit submission is not sufficient enough to cover the interest debit of last 80 days, 90 days or something. Now, today I am on 89th day. If at all today also there is no credit transaction, my account will turn into NPA. Right. If someone from the bank is using or misusing this mirror account, he simply have to debit this mirror account and need to credit my account. He can immediately reverse the transaction as well, or he can give me a credit as well for some days as well.
Now what will happen is, let's say if this is happening on 15th of March, on 31st of March, you won't have any impact because the transaction is reversed. However, through the use of this mirror account, one of the account where the system is perfectly in order, system is perfectly implemented in terms of this particular condition, the system will not identify my account as an NPA. Reason being, it got a turnover. Now whether the turnover is a genuine or not, that is also an area of concern. Now what we need to do as an auditor is, what I would suggest is, you need to carry out with your process, or we need to carry on with your process of year-end balances, obtaining balance certificate, obtaining the statement from the State Bank of India or an RBI, whichever account is there. However, in addition to it, if there are less number of transactions, do check transaction by transaction. In one of the audit, I observed that that was a private sector bank having a very little presence across India. It was a particular segment, a particular location-based bank. What happened was, one of the person wanted, let's say, draft for Guwahati. Now that bank hadn't had any branch at Guwahati. So they were using Dena Bank. At that point of time, Dena Bank or some other state bank, you can take it that way for a reference. So their branch location as the DD issuance. So they used to issue check, like we have the checkbook. So they were also issued a checkbook. So they used to give that state bank's check. Right. In that scenario, what happened? They had written a check. They had handed it over to the person. The person actually encased it as well after 6 days. However, there was no debit into this person's account. And this actually went for 8 months. Meaning thereby the entire internal control process of reconciling was a hogwash. Nobody was doing it, that was clearly visible. I am least concerned with that part, but I am more concerned with why the customer's account was not debited. Now then it opened various aspects. Whether customer was accommodated, that's first. Whether there is any impact on the asset classification, that's second. The third one is that, what about the interest debits? Because the customer was a borrower. He was not a normal current account customer. And what would have happened if customer vanished? Now understand, a small error, intentional or unintentional, I am not going into that part. So to understand this, always generate entire year's mirror account statement and check it with the contrast statement. That's what I learned on that day. It was about in 2014 or 2015. But still I follow this practice because I had a very bad experience that point of time. Right. So this is what I wanted to say on that part. Same set of almost menu codes. Yes, this one. The previous speaker, Saxena ji, also stated this part. Let's understand this. There is a drastic change in revised LFAR, though it has been in vogue for 3 years now, probably more than 3. Review of large advances. Now what is large advance? The definition is changed now. Initially it used to be 2 crore and some percentages were floating around. However, I am not concerned on to that part. I am concerned on how the total advance should be computed. Initially it was only a funded advances, whereas now funded as well as non-funded exposure is required to be clubbed together, and then the percentage should be applied, and then the customer wise funded and non-funded exposure should be equated. Now what will happen is, from balance sheet you can immediately get the funded exposure, and you will be more concerned, or you will be more happy to know that amount as well, right? Okay, but to ascertain that which are the accounts to be selected for detailed review, you need to carry out an entire set of process. आपको ऑडिट शुरू करने से पहले एक इतना बड़ा प्रोसेस करना है कि जब पता चलेगा कितने अकाउंट को मुझे डिटेल में चेक करना है. I have, let's say, funded exposure of 500 crores and non-funded exposure of 300 crores. So what will happen is, my denominator will be 500 plus 300, that is 800. And then I need to have a list of all borrowers
with funded as well as non-funded exposure. Now, this creates a problem. Problem in terms of many of the banks' reports, existing reports, do not have this both information in the same report. There are certain banks who have developed this report as well. They call it 360-degree view. However, if where you are auditing that bank is not having this kind of report, you need to generate 2-3 separate reports. First, advances, normal funded advances report, that would be available. And then the non-funded, BG, LCs, co-acceptances or any other this part. And then you need to create a pivot of all this and then pivot of pivot. That will give you the customer-wise total exposure. Now that total exposure, you need to divide it with, let's say, 800 crores. And then you have 10%, 10 crore. That gives you actually the list of customers where you need to verify transaction in detail. We have not even commenced our audit. ये तो सिर्फ प्रीकर्सर है मुझे ऑडिट शुरू करने से पहले कि मुझे कौन से अकाउंट मैंडेटरीली लेने हैं. Right? This kind of report, no bank is going to give you. There is no command as such, no menu code as such. However, I have given you the entire process, which process you need to do. एक चीज ध्यान में रखिए. Now, this revised LFAR requires you to mention all the accounts that you have verified, including these accounts. और वो लिखना है. So gone are the days where we used to say that अरे वो तो sample में होगा. In case some inquiry comes in, we used to say that might be under sample. No, and this is a factual position. You can't even deny as well. मान लेते हैं कि एक कस्टमर है जिसका 8 करोड़ का है, 7 करोड़ का है फंडेड एक्सपोजर, बट नॉन फंडेड वो 6 करोड़ लेके बैठा है, उसको परफॉर्मेंस गारंटी बहुत चाहिए. आपने वो अकाउंट सिलेक्ट नहीं किया, वो 10% 10 करोड़ में भी आ गया है. आपने अपने LFAR में भी उसको नहीं लिखा. And during the course of an audit by RBI, right, it comes to the notice that ये होना चाहिए था और नहीं किया है. You can imagine. This is factual position. You can't even deny it. Right? So please carry out this process. First, understand this entire process that you have carried out and also understand that there is no error, and then only start the audit. सब कुछ खत्म होने के बाद ये इश्यू मिलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, because there are various points that you need to follow or you need to report into LFAR for these accounts. Right? So it goes with LFAR that for selected account there is a transaction detailing, and for the sample cases you need to do a control testing. Right? So this is what the fundamental that is there they have mentioned when they have revised this LFAR. Credit appraisal, renewal of limit, enhancement of limit. Renewal, sir had already taken, so I will not enter into that part. Even the third faculty is also there. So I need to keep something for him as well. Otherwise, post lunch, and that too in an IREC seminar, he'll have a tough time. But enhancement of limit, let's understand this part. This is also one of the area where manipulation happens. How? Let's take an example. I'm having a CC account with a limit of 250. Fair enough? Now, since last 89 days, the balance outstanding in my account is more than 250. Fair enough? So since last 89 days, I am in an overdue position only. If on this today's day end, that is 90th day end, if I still remain overdue, then I will be considered as an out of order. My account will be considered as an out of order and NPA. Right? Now, what system does is, every day end, system asks a question or a query would be there, whether, let's say my account balance is 255. So whether 255 is in excess of 250, that is the DP or an SL, whichever is less. So answer is yes, so I am in overdue. On 89th day, someone updates the limit from 250 to 275. Right? Understand this. Now what will happen on 90th day end? System will again ask the same question, whether 255 is greater than 275. Answer is no. Meaning thereby I am within the limit.
I am not disturbing anything with respect to account transactions, but I am now touching on to the master itself. It is happening rampantly. Now what you need to do, see, I have given you the danger, or I have given you the part where there might be a problem. We need to have an exhaustive Excel file for our working paper purpose, where we need to document all these changes. Changes means changes in interest rate, changes in the loan expiry, changes in sanction limit, changes in DP, and those changes we need to check it in the file, whether the sanction is available for these cases or not. Now when you identify that there are certain cases where there is no sanction available, but then there is a change in the system, you need to dig further how it can happen. Appraisal part, approval part, everything would be there. I am more concerned with now manipulation of system is into this part. In that part you need to definitely mention under sanctioning part. But whether this manipulation had any impact onto asset classification or automatic classification of asset as per IRAC norms, it will definitely have. Now then comes another question which is there again in LFAR, whether this can be considered as a manual intervention. Now what we generally do is we consider that way. Manual intervention means सिस्टम ने उसको सब स्टैंडर्ड में डाला और कोई जाके उसको रब करके स्टैंडर्ड करके आया. So we consider that directly as a manual intervention. No. I used to, on a lighter note, I used to say this. There are various things that are happening. The systems are perfectly in order. However, the people, maybe on this side or that side, they make system to behave in such a weird manner. So I give example of Tesla, Google Maps. You all would have heard about one news item where in London one person had tried to game the Google Map system. So he actually took a trolley with 100 mobile phones with Google Map on and location on, right? And he walked very slowly on the particular empty stretch of road. Whereas when you go into the Google Map, it shows that there is a heavy traffic there because 100 cars are there now and they are moving at a very slow speed. The system is fine. Someone is gaming the system. Now always keep this in mind. Many of the time system is perfect, but this does not mean that Google Map is always right. Right? Apple's map is worst as well. Right? Okay, because you have a news item for that as well. As someone was taken to the this desert for miles and miles, and then that fellow sued. So they always mention as a disclaimer, Aju baju bhi dekho pehle. Don't trust the maps. See the surrounding as well. Right? So that's what is the message for us. Identification, classification, revenue recognition, provisioning and reclassification. So पूरा सर्कुलर 5 हिस्सों में बांट दिया है, पैरा नंबर के साथ दिया हुआ है और उसके साथ क्या चेक करना है वो लिखा है. तब जाके आप बोल सकते हो अगर उसमें टिक हुआ, ये हुआ और सभी टिक यस हुए तो सिस्टम बराबर है. यू कैन मेंशन यस एंड यू कैन मेंटेन अ वर्क पेपर. नाउ ये जो काम मैं बोल रहा हूं दैट इज फॉर ओनली वन क्वेश्चन ऑफ LFAR. नाउ जस्ट इमेजिन. बट इफ यू मेंशन नो देन यू नीड टू मेंशन कहां प्रॉब्लम है. अभी यस और नो आंसर भी नहीं है. ब्रांच क्रेडिट कार्ड इश्यू ही नहीं कर सकती है तो क्या आप बोल सकते हो कि IRACP के प्रोविजन सिस्टम में बराबर लगे हुए हैं. आपके पास देखने के लिए डेटा ही नहीं है बिकॉज वो बैंक क्रेडिट कार्ड ही इश्यू नहीं करते. तो अभी तीसरा ऑप्शन है नॉट एप्लीकेबल. बट क्यों नॉट एप्लीकेबल? प्लीज रीड दैट पार्ट. IRA को लीजिए, IRACP सर्कुलर लीजिए. ये गाइडलाइन कोड पूरा डाइसेक्ट किया है. तकरीबन 24 या 25 इवेंट्स है जिसमें अकाउंट डाउनग्रेड हो सकता है. अंडरस्टैंड दिस. अकाउंट NPA होने के कंडीशंस बोलो या इवेंट बोलो, देर आर अबाउट 24 to 25. Whether all conditions have been checked by us. और अगर आप कॉन्करेंट ऑडिटर है तो आप मंथली ये लिख रहे हो हाँ सब कुछ बराबर है, सब कुछ बराबर है. थिंक इट ओवर. अभी नेक्स्ट सर्टिफिकेट दो ना या नेक्स्ट रिपोर्ट दो, उसके पहले सोचो और ये एक्सरसाइज करो. Fair enough? Okay. Now let's come back to this.
ये जो मैंने 250, 255, 275 वाला एग्जाम्पल दिया, उसको कैसे ट्रैक करें? मैंने एक एक्सेल फाइल बनाने के लिए बोला, वो एक्सेल फाइल में अभी क्या करना है वो बताता हूं। कोई भी एक इश्यू के लिए 3 पार्ट, राइट? कैसे? समझ लीजिए कि फर्स्ट कॉलम है वो अकाउंट नंबर है और कस्टमर का नाम या जो भी आप करते हो। बाद में जो कॉलम्स आते हैं, अभी एक एग्जांपल लेते हैं लिमिट वाला। लिमिट में 2 एस्पेक्ट है, सैंक्शन लिमिट एंड डीपी। फेयर इनफ, राइट? हर एक सिस्टम ऐसे डिजाइंड है, लीस्ट ऑफ बोथ, एसएल या डीपी, जो कम है वो लिमिट है, राइट? ये तो टेस्टेड है, आप कर सकते हो टेस्ट, बट ये टेस्टेड है। तो आपको 2 चीज देखने हैं, एसएल में कोई चेंजेस हुए हैं अपने ऑडिट पीरियड में, राइट? तो आप क्या कर सकते हो, एसएल के लिए 3 कॉलम, व्हाट इज देयर इन द डॉक्यूमेंट। आपके पास डॉक्यूमेंट फाइल है जहां सैंक्शन पूरे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, राइट? उसके अंदर क्या लिखा है, कोई चेंज हुआ है या कोई डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है? मान लेते हैं नहीं है, बट सिस्टम के अंदर जाते हो आपको 2 बार चेंज दिखता है, तो दूसरा कॉलम है, उसमें लिखो एज पर सिस्टम में ये दिन को इतने अमाउंट से इतने अमाउंट में चेंज हुआ, इसकी इतने अमाउंट से इतने अमाउंट में सिस्टम में चेंज दिख रहा है। और थर्ड जो रहता है ना, उसमें चेंज सिर्फ लिखना है। तो आप अभी इंफॉर्मेशन कंपाइल कर रहे हो, अभी तो ऑडिट नहीं कर रहे हो, इंफॉर्मेशन कंपाइल करना है। तो अब अपने यहाँ जो स्टूडेंट है या आर्टिकल है या कोई पेड असिस्टेंट है, उसको बोलो तू सिस्टम का लिख। आप लोग जो सीनियर है वो डॉक्यूमेंट देखते हैं, वो डॉक्यूमेंट का पार्ट लिखेगा, मर्ज करो, उसके बाद असेस करो, एंड देन कम्स द एक्चुअल ऑडिट। Was there a gaming into the system or not? Now, how to verify it? The excellent set of commands are available in system, provided we are aware of this one. There are certain limitations as well. ACL HM is a command, account limit history maintenance, beautiful command which gives you changes in the limit on day by day basis. The problem, this gives you account by account information, and it cannot give you this entire period based information that 1 अप्रैल से 31 ऑफ मार्च में कितने अकाउंट में कितना हुआ, वो ये कमांड नहीं दे सकता। बट एटलीस्ट हमने 10 अकाउंट सिलेक्ट किए हैं, देन वी कैन मेक यूज ऑफ ACLHM और HACLHM। सेम वे इन केस ऑफ TCS बैंक्स, गो टू द डिपॉजिट CCOD अकाउंट सर्विसेज इंक्वायरी इंटरेस्ट रेट हिस्ट्री। भले ही आपको लगे कि मेनू का नाम इंटरेस्ट रेट हिस्ट्री, अंदर DP हिस्ट्री मिलता है, राइट? Then go to the limit history from drop down. Same way in FlexCube, CH409 and CHM07. Please review this. In case of an ACLHM, you need to carry out process twice, because first you need to mention your account number and then SL. Once SL review is done, you need to mention D, that is for DP, and then you need to carry out that process. Fair enough? But please do this. This is where one of the method where the game happens, and you are not even aware of. Because on 31st of March, everything would be perfectly in order. The report would be perfectly in order. No report would be there where the limits are not matching. So what happens is, we tend to believe that we got a report. The report is also correct because the system information is there. But intervening period, there is a problem. So whichever accounts that you select for sample, at least have these kind of verification done. Now, which are the verifications to be done? Interest rate, moratorium period. You can make a note of it as well if you want to. Loan expiry date, changes in SL, changes in DP. Right? Now, these are where you can verify through the documents as well as through the system. Fair enough? Later on, we'll add up certain other aspects as well. Okay, so this was on limit. Quick mortality, I am just keeping, it's a 12-month, this one. Interest rate. Okay, let's understand the entire gamut of interest rate. There are 2 questions in LFAR with respect to interest rate. One is whether interest rate fed into the system, that is correctness of interest rate fed into the system, and second one is that functionality of EBLR and MCLR based loans into the system, right? So what happens is, we need to first understand how interest rate or the parameters related to interest rates are configured into the system and how it behaves. Can I game this interest rate system as well? I would say yes, pretty easy, right? Okay, let's understand this. There are 2 types in which you can enter an interest rate. I'm going step by step. One, let's say my loan is at MCLR plus 2%, MCLR is for 8, so 10% is
for the time being, let's understand 10%. So I can enter 10% in interest rate field. That's one. Second one is, I'll get the rate based on a reference rate, because my loan is also on a reference rate basis. Fair enough? So now there is a concept called table. Now what is table? थोड़ा टेक्निकल है, एक सिंपल फॉर्म में समझते हैं एक्सेल. एक्सेल में शीट 1, शीट 2, शीट 3 है, राइट? तो आप ऐसा समझ लो कि टेबल माने शीट 2. शीट 1 के अंदर आपको इंटरेस्ट रेट लाना है. शीट 2 जो है वो शीट 2 के अंदर वो MCLR के जितने भी चेंजेस है ना वो रिकॉर्ड है डेट के साथ, कि भाई 1 अप्रैल को MCLR 8% का था, 25 अप्रैल को वो 8.5 का हो गया, राइट? सो इट हैज ऑल दिस इंफॉर्मेशन. So to derive a rate in sheet 1, you refer it to the sheet 2 rate, plus you add the margin, right? So now into this again you have two parts. Whether you have specific table available including margin or excluding margin. So in my case, MCLR plus 2% is the rate of interest. In some banks, they have specific table for MCLR plus 2. So I simply need to select that MCLR table plus 2 table. In certain banks, they say that, no, you simply need to select MCLR table and then there is a space available for spread. Fair enough? Right? तो आपको spread check करना है, अगर spread वाला system है तो MCLR का पूरा interest code ही है तो interest table उठाना है. Right? This is basic one. Now what happened? Now ये तो simple हुआ. अभी मुझे इसके अंदर interest manipulation करना है तो कैसे हो सकता है या कौन कौन से जगह है. जरूरी नहीं है हर एक बैंक के अंदर ये जो मैं फीचर बता रहा हूं वो एनेबल होगा या यूज किया होगा, बट देयर इज अ फीचर अवेलेबल. देयर आर टू एस्पेक्ट्स, कस्टमर प्रेफरेंशियल एंड अकाउंट प्रेफरेंशियल. देयर आर टू टाइप ऑफ इंटरेस्ट, डेबिट इंटरेस्ट एंड क्रेडिट इंटरेस्ट. अभी आप पूरा इंटरेस्ट का वो अगर एक ट्री बनाओगे तो बहुत बड़ा बनेगा. Now into the customer preferential, you have two options, debit interest preferential and credit interest preferential. Same way in account, debit interest preferential, credit interest preferential. Into it, you have positive value and negative value. Right? अभी सिर्फ समझो, मैं आपको अभी लिंक करके बताता हूँ. Now what happens is, my loan is MCLR plus 2, which is 10%, but I've got an account level preference of -2 in debit interest. अकाउंट लेवल प्रेफरेंस में डेबिट इंटरेस्ट में -2 लिखा हुआ है, तो क्या होगा, मेरा इंटरेस्ट -3 लिखा है एग्जांपल. सो MCLR से रेट आया 8, स्प्रेड ऐड हुआ 2, 10 माइनस 3, तो इफेक्टिवली आई विल बी चार्ज 7%. अगर आप स्क्रीन पे देखोगे सिर्फ कि इंटरेस्ट रेट कौन सा दिख रहा है तो आपको MCLR प्लस 2 का टेबल दिखेगा. वेयर इज द इफेक्टिवली आई गॉट चार्ज फॉर 7% ओनली. राइट? ये तो अभी भी मैनेजेबल है, बट प्रॉब्लम लाइज व्हेन द प्रेफरेंस इज गिवन एट द कस्टमर मास्टर लेवल. फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द एंटायर गैमट ऑफ कस्टमर मास्टर, अकाउंट मास्टर एंड ट्रांजैक्शंस. You have a customer master that is a unique to each customer, and then you have multiple accounts under it. Accounts will have transactions. Now if you have an account master, you have a customer master. If you update or you mention anything into the account master, it will have impact onto that specific account. However, when we say that a customer master and account master, it shares the parent and the child relationship, and there comes the inheritance. The moment I update anything into the customer master, it translates to all the accounts under the customer master. Now under a customer master, account preferential, debit account preferential, -3, meaning thereby my all accounts under that customer master would have an impact of -3. Most dangerous one. Now, many of you would question that, ऐसा रखते ही क्यों है? Why such kind of parameters there into the system? Now in many of the banks, there are features available to the staff or some set of person where they get you additional discount, right? Being a staff, you get a, let's say, -1, right? So that they tag it to the customer level. So across the board, the customer will get that. Now there are certain set of schemes as well. Now for this, we need to understand how system is developed. System is never developed as per the requirement of particular bank. It is developed considering all eventualities.
It is on the bank whether they would like to make use of the system or this particular aspect or not. Many of the banks have disabled this feature so that even accidentally nobody updates anything into this one. So the best way to ascertain that whether I can read from sanction letter that what should be the interest rate, but whether the system is also charging the same, because you need to mention it into here, this LFAR part as well, then what you need to do is you need to generate an interest report. What I would suggest is for all sample cases, generate the interest report. It gives you a day-by-day interest computation. There is a command called AINT RPT in Finacle. There is a product sheet in TCS banks, and there is a FlexCube LN801. This is one part. Second part, what will happen if there are changes in interest rate during the year? But at the end of the year, that is perfectly in order. How to identify those kind of things? Then there are two different set of commands that you need to use. INTTI or INTTM in Finacle 7, same way HINTTI or HINTTM in Finacle 10, and interest rate history under TCS banks, and LN022 for interest calculation inquiry. Now, for first two, Finacle and TCS banks, let me give you the difference between the two. INTTM will give you only those information where there is a change in table code. So let's assume that I have an MCLR plus 2 table. I have changed it to MCLR 1 table. Only those entries would appear there, those kind of. In case there is a change in MCLR rate from 8% to 9% and consequent change onto my loan would not appear under INTTM. However, when you are working on a TCS banks under an interest history, you will find consequent changes as well. So what you need to do is you need to have in a paper that on which dates the changes had occurred on MCLR, so that you can negate the impact of changes in MCLR or a reference rate, and then you can ascertain is there any other change than MCLR. Fair enough? Right? The best way is to have a product sheet or an interest report and verify it on screen itself. AINT RPT is an excellent command. It also gives you an option whether you would like to generate it through with penal interest or without. It can also give you report for an NP account or even a closed account as well. Beautiful option. Yeah? Okay, so I think we have gone through, yes, almost all. Limit level interest, it's again a detailed concept. I am skipping it right now. Now this one, periodic review of interest rate linked to MCLR and EBLR. वो ऐसा है कि प्रीवियस जो मैनेजर थे जिनको हटा दिया था, उन्होंने ये कस्टमर के रीपेमेंट में इश्यू आ रहा था, तो वो सिनारियो में उन्होंने क्लीन ओडी दिया था, बट सिस्टम में क्या दिखाया, दैट इज अगेंस्ट एफडी. सो इंस्टेड ऑफ क्लीन ओडी, दैट पर्सन गॉट एन एफडी ओडी, एटलीस्ट ऑन अ सिस्टम साइड वेयर देयर वाज नो एफडी. बिकॉज क्लीन ओडी में क्या होता है, सभी जगह पे आप फंसते जाओगे, अपना बेसल में भी फंसोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी आगे आओगे, बिकॉज क्लीन ओडी रेट तो 18-19% पे वो टाइम पे था, राइट? अभी बेस्ट पार्ट क्या था, वो सिस्टम ऐसा था जो वो टीसीएस बैंक्स था जिसके अंदर आपको पहले कोलेट्रल आईडी खोलना पड़ता है. सिस्टम टीसीएस बैंक्स कैसे वर्क करता है वो समझिए. आप सिस्टम को नहीं समझोगे तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन पता नहीं चलेगी सिस्टम कैसे बिहेव करता है, कैसा गलत बिहेव करता है. इन टीसीएस बैंक्स you need to create a collateral ID for a security. So you have a borrower account, you have a security. Once you create a security collateral ID, that ID is required to be mapped to the account. So that collateral will flow the secured portion to this side. Fair enough? So ऐसा हो सकता है कि मेरा एक FD multiple account के सामने हो सकता है, but amount will remain the same, not the duplicate one. उसमें collateral ID भी खुला था, कोलेट्रल मैप भी हुआ था, समहाउ लीन निकाल दिया था और पैसे उठा लिए थे. वो टाइम के ऊपर इतने सिस्टम नहीं थे, तो जो रिपोर्ट जनरेट करते हैं ना, आपने जैसे सर ने नहीं बोला एस्क्रॉम और वो सब रिपोर्ट होते, वो रिपोर्ट में मैन्युअल अपडेशन पॉसिबल था. मैंने कितनी जगह पे एमओसी दिया था उसको कि भाई एक तो डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है तो वो प्रोविजन कर दो, वो तो बोला ही था.
बट ये एफडी नहीं है, इसके लिए उसको आपको क्लीन ओडी पे जाना है। तो इंटरेस्ट के लिए मैंने एमओसी दिया कि भाई इतना इंटरेस्ट रिकवर नहीं हुआ है, पैसा आया नहीं है, वो भी अकाउंट में कुछ था नहीं तो वो एनपीए में डाला, तो वो इंटरेस्ट लग के फिर रिवर्सल जाएगा। एंड देन उसका कैपिटल एडिक्वेसी के अंदर उसको क्लीन में डाला, राइट। ये तो मैं बच गया, बट वही कस्टमर के दूसरे अकाउंट में मैं फंस गया इन द सेंस आरबीआई एक्चुअली आइडेंटिफाइड दैट अकाउंट एंड देन आरबीआई सेंट मी अ लेटर। वो टाइम के ऊपर मैं सही था, बिकॉज आरबीआई कैरिड आउट ऑडिट ऑन अगस्त में किया, रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट था, अबाउट 60 डे ओवर ड्यू था। सो मैंने अप्रैल में ऑडिट किया, तब तक तो 90 डे नहीं हुए थे। बट रिस्ट्रक्चर में क्लॉज ऐसा है कि 90 डे हो जाता है, एनपीए हो जाता है, तो आपको रिस्ट्रक्चरिंग को इग्नोर करके आगे के जो रीपेमेंट शेड्यूल है, जो इनिशियल रीपेमेंट शेड्यूल था, उसके ऊपर जो भी पोस्ट रिस्ट्रक्चर रीपेमेंट आए हैं उसको मैप करना है और एनपीए का डेट लाना है, राइट। ये प्रोसेस था। अभी जब आरबीआई ने ऑडिट किया तब वो एनपीए हो गया था, रिस्ट्रक्चर हुआ तो डेट मेरे ऑडिट से भी पहले की चली गई। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो लिस्ट बनाते हैं कि जो भी एनपीए हमने आइडेंटिफाई किया उसका डेट क्या है और ऑडिट किसने किया, और वो सबको लेटर भेजते हैं। तभी वो तो सिस्टम में से डेटा निकला तो आ गया। देन आई रिप्लाइड कि मैंने जब ऑडिट किया तब इट वाज 60 एंड वो फेल्ड रिस्ट्रक्चरिंग है, दैट्स नॉट इन माय ऑडिट एरिया, बिकॉज वो जनवरी या फरवरी में तो रिस्ट्रक्चर हुआ था। हाँ, आपको एज एन इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट यू वुड हैव फाउंड आउट दैट दिस अ फेल्ड रिस्ट्रक्चरिंग एंड इट्स अ फिट केस फॉर एनपीए। मैं वो टाइम पे तो बच गया, उसके बाद तो मैंने बहुत सालों तक ऑडिट भी किया, अदरवाइज आई वुड हैव थॉट दैट आई वुड बी अंडर एन ब्लैक लिस्टेड कैटेगरी और काइंड ऑफ थिंग, राइट। बट वो टाइम पे मैं समझ गया कि जब ऑडिट करना है तो चारों ओर से देखना है, सिस्टम को भी ऊपर नीचे करके देखना है, राइट। ओके, सो दिस वाज पार्ट ऑन एफडीओडी, स्टॉक स्टेटमेंट एंड बुक डेट स्टेटमेंट एंड डीपी कंप्यूटेशन. विकास કેટલો ટાઈમ છે? ओके, आई हैव 15 मिनट्स एंड देन क्वेश्चन आंसर है. तो एक काम करता हूँ, यहाँ से स्किप करता हूँ, एक दो पॉइंट पे मैं लेके जाता हूँ आपको, कुछ और चीज़, हाँ यही पॉइंट के ऊपर लेके जाता हूँ. या सी जस्ट ये एक ध्यान में रखिए, ये पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे. Has the branch identified, classified advances into standard, substandard, doubtful loss through computer without manual intervention? Right? Or is this identification and classification in line with the norms prescribed by Reserve Bank of India? इसके ऊपर आप आंसर लिखोगे, राइट? उसके लिए एक्सरसाइज क्या करना है वो एक देखेंगे. एंड द सेम वे इज फॉर एसएमए, राइट? ओके. Yes. Yeah. So this is what the circular of 14th of September 2020, worth reading that circular. बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सर्कुलर का रेफरेंस IRAC में है और उसका रेफरेंस LFAR में है. फेयर इनफ. सो ओरिजिनेशन पॉइंट इज फ्रॉम हियर. उसके पहले भी हुआ था बट ये फाइनल सर्कुलेशन अभी सेटल है. ऑटोमेशन ऑफ इनकम रिकॉग्निशन, असेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग प्रोसेस इन बैंक्स. बहुत जल्दी जाता हूँ. ऑल बोरोअल अकाउंट्स इंक्लूडिंग टेम्पररी ओवरड्राफ्ट irrespective of the size should be through the IT based system. Calculation of provisioning requirement shall also be system based as per preset rules for various category of assets, value of security as captured in the system and any other regulatory stipulation issued from time to time as per provisioning requirement. In addition, income recognition, derecognition in case of an impaired assets. अभी ये समझना सबसे पहला क्वेश्चन, NPA और NPI इन्वेस्टमेंट कितनी बैंक ने मेन CBS सिस्टम के अंदर डाला है वो पहले चेक करो. Very few, because you have separate system available for treasury. Now what will happen in case of an NPI? It has an impact on asset classification, or an asset classification will have an impact on an investment as well. How can you correlate that? That is what is the first and the important question. अगर investment वाला कोई नहीं है तो छोड़ दो, वो जाने दो ये point. The system shall handle both downgrade and upgrade through STP without manual intervention. अभी ये गूगल मैप याद रखना, जो मैंने एग्जांपल दिया ना, वो सिस्टम परफेक्ट चल रहा है बट छेड़खानी करने के लिए लोग बैठे हैं. लिमिट बढ़ा दी, फेक क्रेडिट डाला, टर्नओवर बढ़ाया, TOD दिया और दूसरे में लेके आए, कैश डाला, नया लोन दिया. देयर आर प्लेंटी.
Now this is para 15. All parameters required for NPA shall be captured in CBS or associated subsystem or module. It only talks about subsystems or modules. It does not talk about separate system. Subsystem and a separate system, there is a distinction between the two. So I don't buy the argument कि आप दूसरे कोई सॉफ्टवेयर में काम करो. अगर मैं ऑडिटर हूं तो I will not buy that argument. I'll say that it has to be in, let's say if the bank is using Finacle, then Finacle. I don't buy the argument कि वो Finacle बहुत महंगा पड़ रहा है. That's not my point, or that's not I am concerned with. Right? हाँ, Finacle का ही कोई सब सिस्टम दिया हुआ है उन्होंने, that's fine. Right? Okay. And this is IRACP 4.2.2, which refers to this circular. Now this is LFAR requirement we have already seen. And part 4.2, whether bank has laid down procedure for manual intervention to system generated data and proper authentication of related transaction and trail of manual intervention has been obtained or not. Right. So this is what on RBI guideline perspective. Let's come to this side now. There are various issues in this automated system. Many are fundamentally flawed. Right. First thing, in any system, whether it goes with SMA or asset classification, the fundamental part is overdue. क्या overdue computation सही हो रहा है कि नहीं, वो पहला क्वेश्चन है. overdue किसके ऊपर बेस्ड है? ड्यू डेट के ऊपर बेस्ड है. राइट पूरे फ्लो को समझिए कि मेरे ड्यू डेट कहाँ प्रिस्क्राइब होते हैं? सैंक्शन लेटर में. क्या प्रॉपरली ड्यू डेट मेंशन है? नहीं है तो उसका भी सर्क्यूलर आ गया है कि आप एक कट ऑफ डेट था, वो कट ऑफ डेट के बाद आप जो भी रखोगे उसमें ड्यू डेट मेंशन होना चाहिए, और जो एग्जिस्टिंग लोन है उसको रिन्यूअल के डेट के ऊपर आपको ड्यू डेट प्रिस्क्राइब करनी है. तो गॉन आर द डेज वेयर द बैंक्स यूज्ड टू से कि अरे सर 31 मार्च को तो अभी ड्यू हुआ है, तो आप कैसे बोल सकते हो, थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा ना रीपेमेंट के लिए. ऐसा कोई नहीं है, मैं कोई बांटने नहीं बैठा हूं कुछ. 31st due is 31st. If you do not make payment on 31st of March, there will be 1 day overdue at the end of day process. उसका क्लैरिफिकेशन भी आरबीआई ने IRACP में दिया है. एक दिन का भी क्लैरिफिकेशन IRACP में है. क्या क्लैरिफिकेशन है कि मैं 31 मार्च का एंड ऑफ डे प्रोसेस रन करूंगा, तब मैं 1 अप्रैल को 3 बजे 4 बजे सुबह में होगा, तो क्या फर्स्ट गिनना है या 31st गिनना है? आरबीआई कैटेगोरिकली स्टेटेड 31st of March. Meaning thereby 31st March को 11:59 तक I have time to make payment. If I don't make payment, then I am 1 day overdue. Fair enough? Right. So first thing is that to compute overdue, just ensure moratorium is correctly set up, installment start date is correctly set up, EMI is correctly set up, and in case of a loan expiry, whether that is properly appearing or not. 2-3 पॉइंट बताता हूं, क्विकली बताता हूं. जो हमने एक्सेल की बात किया था उसमें आप EMI को ऐड कर सकते हो, लास्ट डेट अगर नहीं लिखा है तो वो भी ऐड कर सकते हैं. EMI को गलत सेटअप करने से भी सिस्टम ओवरड्यू कंप्यूटेशन गलत होगा. बिकॉज मेरा 25,000 का EMI है, सिस्टम में मैं 15,000 डालूंगा तो वो कंप्यूटेशन गलत होगा. फेयर इनफ. इसके ऊपर में डिटेल में तो मैं 2-3 साल पहले यहाँ बोला ही था, तो उसको आगे नहीं जाते हैं. प्रॉब्लम कम्स विद द बलूनिंग, और ये प्रॉब्लम एग्रेवेट हो गया है लास्ट 2 साल में. देयर हैव बीन फ्रीक्वेंट चेंजेस एंड ऑन एन इंक्रीज ट्रेजेक्ट्री ऑफ लोन फॉर ऑन एन MCLR. वो लोन आप सबके कहीं ना कहीं लोन होंगे या क्लाइंट के होंगे, तो आपको पता है कि रेट बहुत बढ़ गए. नाउ इन केस ऑफ अ चेंज इन रेट, इंटरेस्ट रेट, तो इंपैक्ट आएगा आपकी लोन के ऊपर. नाउ सिस्टम वाइज या टेक्निकली समझते हैं कि इंपैक्ट कहाँ हो सकता है. आइदर यू हैव एन इंपैक्ट ऑन एन EMI अमाउंट और ए लोन एक्सपायरी. दो ही है, ध्यान रखना. राइट, 2 ही जगह पे इंपैक्ट है. ओके. एक तीसरा भी इंपैक्ट है, रादर आई विल नॉट से इंपैक्ट बट देयर इज अ चेंज रिक्वायर्ड, इज रीपेमेंट इंस्ट्रक्शन. राइट, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन जो लगाते हैं वहां भी चेंज चाहिए. राइट, तो अभी 3 चीज को ध्यान में रखिए. इंटरेस्ट रेट 22-23 में तकरीबन 4-5 बार बैंक्स ने चेंज किए. फेयर इनफ. रेट्स बढ़ते गए, बट काफी सारे अकाउंट ऐसे थे जहां EMI या लोन एक्सपायरी चेंज ही नहीं हुई, बट इंटरेस्ट रेट प्रॉपरली सेटअप था, मास्टर के साथ था,
तो इंटरेस्ट रेट तो सही अपडेट हो गया। अभी मान लो कि मेरा इंटरेस्ट रेट 8% से 9% हो गया, तो सिस्टम तो ज़्यादा ब्याज मांगेगी। ज़्यादा ब्याज लेने के लिए मुझे ईएमआई इधर बढ़ाना है या मेरा इंस्टॉलमेंट आगे तक जाएगा। फिर फेयर इनफ, सिंपल लॉजिक है, राइट? ये नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ तो सिस्टम क्या करेगी? सिस्टम ये करेगी, बलूनिंग। समझिए, फर्स्ट लोन है 9900 का नॉर्मल इंस्टॉलमेंट है और लास्ट इंस्टॉलमेंट 91,000, right? Because user has not updated either EMI और loan expiry। तो सिस्टम क्या करेगा कि जो भी है लेना देना है वो सब बाद में, लास्ट में। अभी 2036 में ये जब बंदा लोन खत्म करेगा, मान लेते हैं 2036 तक कोई ब्याज में चेंज नहीं हो रहा है, 9900 पे ही वो जा रहा है, तो लास्ट में वो सीधा ओवर ड्यू में, लास्ट दिन के ऊपर, और बैंक उसको बोलेगी एक 91,000 दो। वो बोलेगा पागल हो गए हैं, 9900 और 91,000। सो आई ऑलवेज से टू ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आपके कोई लोन चालू है तो अभी आप अमोर्टाइजेशन शेड्यूल मंगाओ बैंक से। पर्सनल अपने बात कर रहा हूँ, क्लाइंट का तो बाद में रखो, पहले अपने लोन्स चालू है ना तो मंगाओ और चेक करो। और हो सके तो उनको बोलो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल साइन करके दे दे कि आज के दिन में हमने जो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल जनरेट किया है वो इसके हिसाब से है। उसके दो पर्पज है, अगर बलूनिंग हुआ है तो दिखेगा, तब वहीं के वहीं प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे बाय कंप्लेनिंग और काइंड ऑफ थिंग। दूसरा, अगर अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बोल रहा है कि 9900 इज द रीपेमेंट अमाउंट, बट आपका रीपेमेंट सिर्फ 9,000 रुपए जा रहा है, बिकॉज स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन 9,000 का था, तो आप हर महीने 900 रुपए ओवरड्यू में जा रहे हो। ओवरड्यू के ऊपर पीनल इंटरेस्ट लगेगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपका अकाउंट एनपी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं होगा। दिस इज व्हाट इज बलूनिंग। नाउ बलूनिंग, उसमें इंपैक्ट क्या हो सकता है, व्हाट हाउ वी कंसिडर, एंड दैट्स व्हाट्स ओपिनियन ऑन बलूनिंग। आई ऑलवेज कंसिडर दिस एज ए रीस्ट्रक्चरिंग। इट्स सिंपल, रीस्ट्रक्चरिंग सर ने डेफिनेशन दिखा है तो मुझे तो अभी वो भी नहीं दिखाना है। आधा चीज तो मैंने और सक्सेना जी ने ले लिया। अभी आई डोंट नो व्हाट धनंजय विल डू, राइट? प्रोबेबली ही विल से यू सम स्टोरीज। सो रीस्ट्रक्चरिंग क्यों? एक, कस्टमर को जब ज्यादा ईएमआई देने थे, मैंने नहीं बोला, मैंने बोला नहीं रहने दे, तू लास्ट में देना। एटलीस्ट माई सिस्टम शोज दैट वे, राइट? मैंने उसको बोला कि नहीं, अगर लोन ईएमआई नहीं बढ़ाना है तो आप एक्सपायरी बढ़ाओ, तो एक्सपायरी भी नहीं बढ़ाया। इन अ वे आई अकोमोडेटेड अ कस्टमर कि भाई तुझे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, ब्याज बढ़ने देना। इंपैक्ट इतना ज्यादा है इतने सारे अकाउंट में जहां जहां बैंक ने एक्शन नहीं लिया है या ब्रांच में एक्शन नहीं हुआ है। टन्स ऑफ अकाउंट्स आर देयर, टन्स। और ये प्रॉब्लम जितना टाइम जा रहा है उससे बढ़ रहा है। समझिए क्यों। मैं अगर ये 9900 को मुझे 12,000 करने हैं, और कब से करने हैं? जब से पहला चेंज हो। मैं जितने टाइम आगे बढ़ूंगा उतना टाइम का प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। अभी मैं कस्टमर को बोलूंगा अभी तेरा 12,000, तो बोलेगा सर कहां से दूं? और अगर बलूनिंग को हटाने के करना है तो 15,000 होगा, बिकॉज मुझे आगे के इंपैक्ट को भी सब लेना है यहां। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, और इट्स नॉट गोइंग टू बी सॉल्व्ड इन दैट वेरी इजियर वे। अकाउंट्स कितने सारे एनपीए में जाएंगे, और प्रॉब्लम क्या होगा 2036 में जाएंगे ना, तब पता चलेगा कि ये तो बहुत बड़ा हो गया। ये लास्ट केस देखो, वो तो रीसेंट था, मार्च 23 का ऑडिट था, तो जून में था, 3 महीने ही बाकी थे। ये देखो जितने अकाउंट में हाथ डाला ये सब अकाउंट में प्रॉब्लम। फिर हमने कम कर दिया सैंपल कि भाई नहीं देखना है, बहुत नहीं देखना है अभी। है गुजरातीમાં કહેવત છે ને, જાણેનું દુઃખ છે, राइट? सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस बलूनिंग एस्पेक्ट। उसको सीबीएस में कैसे देखेंगे वो लिखा है। मैंने अभी मेनू कोड्स यहाँ नहीं लिखा है, मेनू कोड आगे भी है, और मैंने जो 2 पब्लिकेशन बताए, मैनुअल ऑन कॉन्करेंट ऑडिट एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट का गाइडेंस नोट, वो आप डाउनलोड कर दो। उसके अंदर बहुत डिटेल में ये सीबीएस के चैप्टर है, वो बहुत डिटेल में है, तो आपको मिल जाएगा उसमें। और ये प्रेजेंटेशन तो इन एनी केस आई विल शेयर, राइट? सो क्या क्या चेक करना है ये पर्सपेक्टिव के लिए। ऊपर है ना वो पैरा नंबर है IR1 के। देन कम्स हाउसिंग लोन। कस्टमर को अपने क्या बोलते हैं, सॉरी, हाउसिंग स्टाफ लोन। कस्टमर को ऐसा बोला कि ये स्टाफ है, वेयर एज देयर इज नो लिंकेज बिटवीन द HR सिस्टम एंड द CBS सिस्टम, राइट? तो
तो जो स्टाफ नहीं है उसको भी फैसिलिटी मिल रही है। स्टाफ लोन में बेसिकली बेनिफिट क्या होता है कि आप इंटरेस्ट पे ऑफ करो, बाद में प्रिंसिपल लेंगे, या थोड़े टाइम के लिए आपको कुछ नहीं है, ज़्यादा मॉरेटोरियम है, काइंड ऑफ अलग अलग तरह के फैसिलिटीज़ होते हैं, यू कैन जस्ट हैव दैट काइंड ऑफ थिंग। एक लास्ट पॉइंट दिखाता हूँ, या ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट 2.1.2.2 तीन लिम्स है आउट ऑफ ऑर्डर के, बैलेंस कंटिन्यूस इन एक्सेस, चेंज मेड इन लिमिट। लिमिट को अगर चेंज कर दिया तो मैं सरकमवेंट कर दूंगा, राइट? दूसरा, बैलेंस विद इन द लिमिट बट देयर इज नो क्रेडिट, तो मैं उसको क्या बोलते हैं, एक पॉइंट, हाँ एक पॉइंट आता है, काफ़ी सारे बैंकर्स ऐसा समझाते हैं कि एडवांस में पैसा भर दो ओडी अकाउंट में और लिमिट के नीचे लेके आओ। तो प्रॉब्लम क्या होता है ये सिनारियो में, यू डोंट हैव 90 डे रनिंग में है अभी, नॉट इवन द क्वार्टर एंड और अ मंथ एंड, नाउ इट्स अ रनिंग। आज देखा तो आज से पीछे जाके 90 डेज। इफ आई डू अ रीपेमेंट इन द फर्स्ट वीक इटसेल्फ और वो लिमिट के नीचे लेके आता हूं और मैं बोलता हूं अभी तो मुझे जरूरत ही नहीं, आपको जो ब्याज लगाना है वो लगाओ, बट मैं विद इन द लिमिट रहूंगा, नहीं, अकाउंट एनपीए हो जाएगा। सो इन दैट सिनेरियो व्हाट विल हैपन, देन कम्स क्रेडिट नॉट इनफ टू कवर डेबिट, तो टर्नओवर बढ़ाने का, राइट, जो हमने एग्जांपल लिया। वन मोर पॉइंट, या ड्रॉप लाइन ओडी और स्मार्ट ओडी, होम ओडी, क्या क्या नाम है। Basically, it's an hybrid product between the term loan and an OD, which is touted to be the best product by banks. जब तक आरबीआई ने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया तब तक वो सब भी बेस्ट ही लगता था, बिकॉज वॉट यूज टू हैपन व्हेन ऑडिटर यूज टू क्वेश्चन, इसको आप क्या गिनते हो, जैसे आगे से घोड़ा दिखता है पीछे से गधा दिखता है, राइट? तो आपको आइदर आगे दिखाते हैं या पीछे दिखाते हैं, कभी कंप्लीट पिक्चर नहीं आता है। इट वॉज ऑन अ लाइटर नोट। Now what happens is when auditor used to say कि इसमें रीपेमेंट नहीं आ रहा है, एनपीए करो बिकॉज ये ओडी है, नहीं नहीं सर ये तो ड्रॉप लाइन ओडी है, एवरी मंथ लिमिट चेंज होता है, इट इज काइंड, और उसमें हमने इंस्टॉलमेंट भी फिक्स किया है, इट इज अ टर्म लोन फॉर एनपीए परस्पेक्टिव। बट आप बोलो कि ऑपरेशन ऑफ अकाउंट तो चेकबुक से ऑपरेट कर सकते हो, आप डाल सकते हो, ले सकते हो, डाल सकते हो, तो वो टर्म लोन का नहीं, नहीं सर ऑपरेशनल इट इज ओवरड्राफ्ट, मीनिंग देयर बाय ये अकाउंट कभी एनपीए होते ही नहीं है। डू यू मीन टू से दैट वे? और वही अकाउंट से मैं पैसा निकालूंगा, वही अकाउंट में वापस डालूंगा, यही चलता था। इट वॉज एन रिफाइंड वर्जन ऑफ केसीसी। केसीसी में इतना ही है कि ड्रॉप लाइन नहीं होता है, राइट? नाउ आरबीआई इज कैटेगोरिकली स्टेटेड, आप जो भी नाम लगाओ, जो भी करो, दिस विल बी कंसिडर्ड एज एन ओडी। अभी इसके अंदर बैंक्स क्या समझाती थी कि आपको 50 लाख का लोन है, बट ये डीपी है ना, आपको एक्सेल में भी कंप्यूट करना है, उसमें भी और प्रॉब्लम्स है। अभी बहुत प्रॉब्लम्स बताऊंगा तो आप सब लोग चले जाएंगे कि ऑडिटिंग नहीं करना, राइट? फिर सुनील जी और ये विकास जी जैसे सब लोग मारने निकलेंगे, अभी नेक्स्ट टाइम आप नहीं। पॉइंट इज एक्सेल में करना है, डीपी प्रॉपर कंप्यूट हुआ है कि नहीं, बिकॉज मार्जिन के इश्यूज है, मार्जिन चेंज कर देते हैं सिस्टम के अंदर। काफी सिस्टम तो ऐसी मस्त डिजाइन है, आप जो वैल्यू डालोगे ना वही वैल्यू देगी, कोई कंप्यूट नहीं करेगा, राइट? तो बैंक बोलेगा कि नहीं हमारे डीपी कंप्यूट करने के लिए एक्सेल की फाइल है, उसमें हमने क्या फॉर्मूला देखोगे तो चेंज हो गया होगा, इसीलिए मैंने बोला। और ये क्यों बोला पता है, एलएफआर में क्वेश्चन है वेदर डीपी इज प्रॉपर्ली कंप्यूटेड, राइट? ओके, सो डिराइव्ड वाले केसेस प्रॉब्लम है, फिक्स्ड वाले प्रॉब्लम है, राइट? सो आई थिंक देयर आर plenty of part but will not be in a position to take care of. क्वेश्चंस है तो बताइए। हाँ, these are few of the case studies। नए लोन दिए, एग्जैक्टली रीपेमेंट करने जैसे, टीओडीज दिए, टीओडी से पैसे खड़े किए, लिमिट खड़ा किया, लिमिट में से क्रेडिट जनरेट किया और दूसरे अकाउंट में डाला और उसको बचाया, और ऐसा हर 80 से 90 डे के बीच में यही काम होगा, राइट? नाउ दिस इज क्रेडिट टर्नओवर, 9 करोड़ डेबिट, 9 करोड़ क्रेडिट, राइट? You can just see to it, the balance is same, 4,36,005. This was the case where smart था थोड़ा बंदा, जो उसने पीओडी किया, उसके बाद कैश विड्रॉल किया। कैश विड्रॉल करने के बाद बिकॉज कैश जैसे आता है तो ऑडिट में निकल जाता है, तो कैश विड्रॉल करने के बाद तुरंत ही कैश डिपॉजिट किया। जो बंदा इतने महीने से कुछ नहीं कर रहा है, इतना ही पैसा वो भी कैश में एक साथ डाल रहा है, देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट एडिंग अप। तो जब पता आता, जब कुछ क्रेडिट आता है तो वो सही है कि नहीं, एंड आई नेम इट एज वेरीफाई द सोर्स ऑफ सोर्स, कहाँ से पैसा ओरिजिनेट हो रहा है।
वो ओरिजिनेट जहाँ हो रहा है ना उसको सर्च करो, राइट। कैश से ओरिजिनेट हुआ तो मैं जनरली क्या करता हूँ, जो दिन पे कैश से ओरिजिनेट वो दिन का टीओडी रिपोर्ट निकालता हूँ, और कितने लोगों ने टीओडी लिया, टीओडी लेने के बाद जो लिया उसने क्या किया, राइट। उसमें से टेलर अकाउंट नंबर को निकाल के टेलर अकाउंट को वो दिन पे ट्रांजैक्शन सीक्वेंसिंग करता हूँ। अगर सेम कस्टमर ने टीओडी लिया है और कैश का है, देन मेरे पास मोर और लेस 95% मैच है। आज तक हम जो बैंक में ऑडिट कर रहे हैं उसमें भी हमको देखना है क्रेडिट में टाइम से रिपोर्ट हो रहा है कि ये 5 करोड़ के ऊपर या मल्टीपल बैंक में जो है, राइट, उसमें देखना है। ओके, क्लास पॉइंट बताता हूँ, देन वी कैन क्लोज दिस पार्ट। एक LFAR के अंदर एक आइटम है जिसके अंदर आपको रिपोर्टिंग करना है, जिसके अंदर ऐसा लिखा है, हैव यू ऑब्जर्व, ध्यान से समझना कहाँ गेम होती है। हैव यू ऑब्जर्व इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ लिमिट व्हिच वाज परमिटेड पोस्ट पीजी इन्वोकेशन और एलसी डिवॉल्वमेंट। आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये क्या है, पता नहीं चल रहा है या उसका एक्चुअल रीजन क्या है, राइट। पहले रीजन समझो कि कैसे सब ये होता है। एग्जांपल लेते हैं, आई हैव अ 300 करोड़ फंडेड एंड 200 करोड़ नॉन फंडेड फैसिलिटी। मैंने पूरा 300 करोड़ यूज किया है, पूरा, अभी एक पैसे का जगह नहीं है। 200 करोड़ भी पूरा यूज किया है, सब एलसी बीजी सब इश्यू हो गए। एक 50 करोड़ का बीजी इन्वोकेशन हो रहा है। द मोमेंट देयर इज एन इन्वोकेशन, बैंक को पैसा देना है और वो ऑफ बैलेंस शीट से ऑन बैलेंस शीट में आएगा, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन होगा और मेरे फंडेड में ऐड हो जाएगा 50 करोड़, राइट। फंडेड में जगह ही नहीं है, फंडेड तो 300 यूज कर लिया, अगर वो 50 ऐड करेगा तो ओवरड्यू में जाएगा, व्हिच शुड बी आइडियली द केस, राइट। अभी इंटरेस्टिंगली आई ऑलवेज से दिस, वी आर अ कंट्री ऑफ अ फर्टाइल माइंड। 130 करोड़ का देश है, अभी 140 हुए होंगे, बट हम फर्टाइल माइंड है, तो लोगों के दिमाग में एकदम बढ़िया बढ़िया चीज निकलती है। सो बैंक्स काफी बार क्या करते हैं, जब सैंक्शन होता है ना तभी एस्केप रूट निकाल के रखते हैं कि इसको ये बीमारी होगी तो हम उसकी दवाई अभी से लेके रखते हैं। वहां वो इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ लिमिट अलाउ करते हैं, सैंक्शन लेकर करते हैं। अभी ये सिनेरियो में क्या होगा कि 50 करोड़ जब आया तो बैंक टेम्पररी क्या करेगी, एक ऑफिस अकाउंट में पार्क करेगी, टेम्पररी, मैं इवन डीएनपी नहीं बोल रहा हूँ, टेम्पररी। जैसे ये ऑफिस अकाउंट में पार्क करेगी, फिर एक दूसरा एक्शन करेगी कि मेरे 200 करोड़ में से 50 निकल गए, तो अभी मेरे 150 करोड़ हो गए फंड नॉन फंड बेस में, तो मेरे पास 50 करोड़ नॉन फंड बेस फ्री हो गया, तो नॉन फंड बेस को कन्वर्ट करके फंड में डाल देगी, तो मेरा 350 करोड़ हो गया। अभी 350 करोड़ हो गया, उसके सामने मैंने 300 यूज किया है, वो तो सामने अलग जगह पे पड़ा है, उसको वापस यहाँ लेके आओ तो 350 बढ़िया, एकदम मस्त। आपने नया जामा पहना दिया और मस्त बना के बेच दिया, राइट। सो व्हाट आरबीआई इज एक्सपेक्टिंग इज, हैव यू ऑब्जर्व दिस काइंड ऑफ इंस्टेंस। मैं ऐसा नहीं बोलता उसका एनपीए करो, वो आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपको जो करना है, विंडो ड्रेसिंग है या उसको आप क्या समझते हो वो आप करो। आरबीआई ने क्या बोला, ऐसे केसेस है तो आपको एलएफआर में लिखना है कि 2 लिस्ट निकले हैं तो सब लोग वो मिक्स एंड मैच कर रहे हैं कि कौन से पार्टी को क्या मिला, क्या न्यूज़ आया, तो जिसको जो पार्टी सूटेबल लगती है और जिसको वो ओपोनेंट लगता है तो सामने सामने चालू है। अभी ट्विटर इज फुल ऑफ दिस नाउ, राइट। दो, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला है कि आप मैच करके दो, राइट, फेयर इनफ, बट इन दिस केस यू नीड टू मैच, राइट। Thanks a lot. It was wonderful to share my views with you, all of you. Yeah, thank you. Thank you so much, sir, for this wonderful session. I request. 2 minutes. Please wait for 2 minutes, please. I would like to request RCM Vikas Jain sir to give vote of thanks to sir. Thank you, Niyati Ben. I only request to sit for 2 minutes. The reason being, none of the faculty charges anything from us. They spare their entire day traveling and doing all these things. So as a matter of respect, as a token of respect, we need to give them vote of thanks at least. And that for 2 minutes I request, please, whenever we are having any program, if we have gone in between out, that is okay. But at least at the time of vote of the thanks,
as a matter of respect, we should not leave. No offense to anybody, but this is my humble suggestion to all, please. Kuntal bhai, what I should say, he is one of the finest faculty in the country. If we talk about the bank audit, he is most sought after as well. The reason being, he has displayed his skills to all of us. Very practical. Theory to बात नहीं करता. Very practical, whatever it is. And gone are those days when people used to have the bank audits only for the sake of the fee which could increase or raise the bar of our average income of the year. But the things are changing like anything. Is being into the public life as a regional council member or earlier into the branch, what we are seeing these days, lot of notices of disciplinary, all these things are coming even to the statutory audits of the bank, I would say. If there are problems, then the things are really difficult. So we need to be very serious in our business. And frauds, the techniques of frauds are increasing like anything. Though we are not the forensic auditors, but the expectation of the people from us is more than the forensic auditors, I would say. Without authority, just like the CBI or something, they would be having the authority. We don't have the authority, but still the expectation from us are I would say, much more than what it is. So thank you, Kuntal bhai, for being with us and giving your time. I know that he has said no to many branches across the country because today he has to be here in the Ahmedabad branch. Thank you once again. And more than this, he also do not accept any memento or anything or bouquet. He said in the mail specifically कि हमारी घरनी ज branch है and please avoid all these formalities. I would like to give maximum time to the members. Don't do any such thing. So great gesture. So we'll not stand between you and our lunch time. Jain lunch is there at the second floor, and for all others it is there at the ground floor. Thank you, and we'll join after half an hour, right? Thank you.